Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 8 and the name of our unit is Professions and Occupations Around Us. यानी कि जो मुख्तलिफ शोबे हैं हमारे इर्द गिर्द हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. So my dear students, now let's start with the project. आज हमारा जो यूनिट है, आज जो हमारा लेक्चर है वो एक प्रोजेक्ट है, एक एक्टिविटी है जो आप लोगों ने परफॉर्म करनी है. आप किस तरीके से इसको परफॉर्म करेंगे, आई विल प्रोवाइड यू विद ऑल द इंस्ट्रक्शंस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर. लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन आंसर. हु प्रोवाइड्स अस विद डिफरेंट थिंग्स ऑफ डेली यूज, यानी कि हम मुख्तलिफ रोजमर्रा की अशिया कहाँ से खरीदते हैं? शॉप से. वेरी गुड. एंड हु सेल्स देम टू अस? शॉपकीपर. वेरी गुड. एंड हु मेंड्स आवर शूज? हमारे जूते कौन सिलाई करता है, कौन ठीक करता है, मुरम्मत करता है? That is a cobbler. Very good. Okay, my dear students, so in today's lecture, the students will be able to recognize the role of some common professions in their daily lives. So, my dear students, हम इस SLO को previous lecture में कर चुके हैं कि मुख्तलिफ जो आपके पेशे हैं, जो कि आम पेशे हैं, जो कि आप अक्सर अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम उनके बारे में आज बात करेंगे एक प्रोजेक्ट के जरिए. प्रीवियस लेक्चर में हमने उसके बारे में रीडिंग की थी, अब हम उस पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, लेट्स हैव अ लुक. सो प्री रीडिंग क्वेश्चन, व्हाट डज अ डॉक्टर डू फॉर अस? एक जो डॉक्टर है वो हमारे लिए क्या करता है? हमारा इलाज करता है, हमें मेडिसिन देता है when we are not feeling well, when we are sick. So my dear students, let's quickly move forward towards the project. It is given on page number 65. Quickly pause the video and open it in your GK2 books. I hope everybody has opened the page. So my dear students, let's start the instructional, जो आपको मैंने instructions देनी है. Let's have a look at them. So my dear students, project आपका क्या कह रहा है? Visit a government hospital in your area nearby. Observe different people working there. Identify and note down their professions and the work they are doing. What is the hint? You have to look at the different professions which work in a hospital, like a cleaner, lab attendant, doctor, nurse, etc. So you have to observe all these different professions. So ये एक ही जगह पे, एक ही हॉस्पिटल में आपको कितने डिफरेंट तरह के जो शोबे हैं या पेशे हैं वो आपको मिलेंगे, जैसे कि एक क्लीनर, लैब अटेंडेंट, डॉक्टर, और ये तमाम मिलके जो हैं डिफरेंट सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और इसी वजह से एक हॉस्पिटल जो है वो सक्सेसफुली रन होता है. प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड प्रेजेंट इट इन योर क्लास. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई कैन नॉट टेक यू टू द हॉस्पिटल बट आई कैन वर्चुअली टेक यू टू द हॉस्पिटल. मैं आपको एक पिक्टोरियल टूर दूंगी. वी विल लुक एट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस और फिर हम गेस करेंगे ये कौन सा प्रोफेशन है और ये हमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है. लेट्स हैव अ लुक. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट लेडीज या जेंट्स आपको अक्सर नजर आते हैं. द लेडीज आर ऑफन वेयरिंग वाइट ड्रेसेस विद अ कोट एंड अ दुपट्टा ओवर इट. सो ये आपको अक्सर इंजेक्शन लगाती हैं और ये आपके फॉर्म्स वगैरह फिल करने में आपको हेल्प करती हैं और ये अक्सर डॉक्टर के साथ आपको नजर आती हैं. सो कैन यू गेस हु इज शी? शी इज अ नर्स और ये आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं व्हेन एवर यू विजिट अ हॉस्पिटल, या जब आप एडमिट होते हैं तो आपको इनसे ज़्यादा जो है आपका वास्ता पड़ता है और आप इनके साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं. देन अ क्लीनर, आपको देख के पता चल रहा है अ पर्सन विद अ मॉप एंड ही इज क्लीनिंग द हॉस्पिटल. अगर ये ना हो, ये हमें सर्विसेज हॉस्पिटल में ना प्रोवाइड करें तो आपका हॉस्पिटल हमेशा गंदा रहेगा. जो भी वहाँ पे डर्ट या बैंडेजेस या मुख्तलिफ कचरा वगैरह पड़ा होता है वो कोई भी पिकअप नहीं करेगा एंड योर हॉस्पिटल विल बी एक्सट्रीमली डर्टी. तो हमें इनका बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि ये हमारे हॉस्पिटल्स को टोटली नीट एंड क्लीन और जर्म फ्री रखते हैं. नेक्स्ट इज अ पर्सन हु वर्क्स इन अ लैब. और जितने भी आपके ब्लड सैंपल्स, यूरिन सैंपल्स और डिफरेंट आपके सैंपल्स होते हैं, जब आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं दैट गिव अ ब्लड सैंपल या CBC रिपोर्ट आपको लेनी है, तो यू गिव अ टेस्ट ऑफ योर ब्लड सैंपल to a person who is known as a lab attendant. और ये मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के थ्रू आपके ब्लड को टेस्ट करते हैं या आपके सैंपल्स को टेस्ट करते हैं और आपकी रिपोर्ट आती है जिससे आपके डायग्नोसिस में यानी कि आपकी मर्ज को जांचने में हेल्प आउट करते हैं. सो दिस इज अ लैब अटेंडेंट एंड ही और शी, ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, दे वर्क इन अ लैब. And this is the whole team that work inside a hospital. These are all the doctors, nurses,
cleaning staff, lab attendants, and collectively they work together. They provide you with different services whenever you visit a hospital. और इस तरीके से एक hospital जो है वो successfully run करता है. So my dear students, now is the time for evaluation. So quickly tell me who treat patients in hospitals. That is a doctor. Very good. So my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and the roll number and then start working. Guess the profession. I give medicine to patients. I am a doctor. I clean the floor of a hospital. I am a cleaner. I get samples for blood test. I am a lab attendant. I do checkup of patients. I am a doctor. I collect empty drips and used injections. I am a nurse. No, sorry, I am a cleaner. I injected medicines to patients. I am a nurse. So this is how you will complete the worksheet. Pause the video and quickly finish it. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will repeat the project at home. Go with your parents and visit the hospital and observe different service providers over there. And then analysis and interpretation of section C given on page number 66. You will do it in your books. So my dear students, this is the analysis and interpretation. Match the element tools of their specific profession. For example, a teacher. She works with a book. A pilot. Then a farmer. Then a gardener. A sweeper, and the ये तराजू है, balance है जो कि lawyer के लिए या law के लिए use होता है. So this is how you will complete it in your homework. And my dear students, the wrap up of the lesson is nurses, doctors, and attendants are cleaners provide us with different services at hospitals. So my dear students, do perform the project with your parents, and I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.